प्रभु सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने नंबर शेयर किए हैं व्हाट्सएप, आपका महासेवा का प्रभु सर के ऑफिस का नंबर। आप वहां पर भी कुछ भी आपकी क्वेरीज हो, वहां पर पूरी टीम है, डीम कन्वेंस से रिलेटेड और रेरा और तमाम अलग अलग विषय से रिलेटेड दोस्तों। तो मैंने महासेवा का ऑफिस का नंबर शेयर किया है, मेरा नंबर शेयर किया। आप कुछ भी क्वेरीज है आप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तमाम आप सवाल जवाब लेते हैं। राजीव सक्सेना जी। यस, जरूर जरूर राजीव जी, आप यस आने के पहले मैं एक ऐलान करना चाहूंगा। जो हमने महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर जो डिसीजन लिया है, भले 1 जनवरी 2021 से लेके 15 जनवरी 2021 तक जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपना पूरी कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट इसमें सहयोग करने वाले एक अवेयरनेस कैंपेन डीम्ड कन्वेंस को लेकर, एज फार एज महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर जो आगे आने वाला एक साल पूरी तरह से एवरी डे मंडे से लेके संडे तक तो आपको हमारा ऑफिस में मुफ्त सलाह दिया जाएगा, उसका इंफॉर्मेशन बुकलेट दिया जाएगा, उसका पूरा प्रक्रिया आपको बताया जाएगा। हमारा अलग अलग ब्रांच है, हमारा अलग अलग पीआरओ है, वो पूरी तरह से आपको गाइडेंस दिया जाएगा। यदि जरूरी है आपका अपना सोसाइटी में बुला सकते हो, उधर भी हमारे जो कार्यकर्ता है, कम से कम हमारे एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, 15-20 पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, वो भी आपका ऑफिस सोसाइटी में आके आपको मुफ्त में सलाह देगा। ये पूरी प्रक्रिया एक साल 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी दिसंबर 2021 तक हम करेंगे। और आपको सुन के आश्चर्य होगा और अच्छा भी लगेगा, हमने डीम्ड कन्वेंस के ऊपर लगभग 25 से 30 पेज का एक पूरी इंफॉर्मेशन बुकलेट बनाने का शुरुआत किया है, जिसका इनॉग्रेशन भी हम आने वाला 2-3 दिन में हो सकता है मुख्यमंत्री के हस्ते करेंगे और आप लोगों को ये पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। उसका कामकाज चालू है, क्योंकि भले सर्कुलर 22 जून 2018 का सर्कुलर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कई बार वो सर्कुलर पढ़ना समझना इतना आसान होता नहीं है। तो हम इसको लेमैन लैंग्वेज में इंग्लिश और मराठी में ये पुस्तक क्या प्रसिद्धि कर रहे हैं, बहुत सारा गवर्नमेंट का जीआर उसमें डाल रहे हैं, ताकि ये बिकम्स ए हैंडी बुक फॉर अ प्रोफेशनल, इट बिकम्स ए हैंडी बुक फॉर द ऑफिस बेरर, ताकि इसमें सवाल जवाब भी डालेंगे। तो इस तरह का एक किताब भी हम इंफॉर्मेशन बुकलेट मुफ्त में हर सोसाइटी का दरवाजा में पोस्ट से भेजने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस मुहिम को गवर्नमेंट के साथ जोड़ना और गवर्नमेंट के साथ जोड़कर हर आदमी को मदद करना, ये हमारा मकसद है। ये मकसद गया 6 महीने 8 महीने में हमने किया और आने वाला दिनों में भी करेंगे। आपके लिए जो भी अच्छा काम होगा वो करने का हम पूरी प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू धन्यवाद राजीव रमेश जी, सक्सेना। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सर जी। और जैसे कि हमारा ये एसोसिएशन महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के हितों के लिए काम कर रहा है, और ये जान के बहुत ही खुशी हुई कि ये मुहिम को हम और आगे एक साल तक बढ़ा के सभी सोसाइटी में इसका फ्री मतलब अवेयरनेस कैंपेन बोलिए, और जैसे भी सर ने बोला वो शुरू कर रहे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सभी के लिए, सभी सोसाइटीज़ के लिए। और मुझे लगता है इसका बेनिफिट हमारे महाराष्ट्र में सभी सोसाइटीज़ को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो चैट बॉक्स में है मैं पुटअप करता हूँ। काफ़ी क्वेश्चंस का मुझे लगता है कि रमेश सर ने बहुत बेफाकी से उसका रिप्लाई दिया, लेकिन फिर भी क्लैरिटी के लिए कुछ क्वेश्चन है जो मैं पूछ रहा हूँ। हेमंत जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वाई वी नो वाई डज वन ऑप्ट फॉर डीम कन्वेंस, want to check does the law and rule of the land recognize deemed conveyance and conveyance on the equal basis, equal standing? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। इनका सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंस एंड डीम्ड कन्वेंस। क्या कन्वेंस और डीम्ड कन्वेंस में दोनों में आपको पूरी का पूरी सहयोग मिलेगा? क्या ये अलग अलग है या सेम है? तो मुझे आपको बताना है। देखिए, ये बिल्डर का दायित्व होता है, लैंडओनर का दायित्व होता है, जिन्होंने आपको फ्लैट बेचा है और करोड़ों रुपया लिया है, को उनका जमीन और बिल्डिंग आपके नाम से करके देने का। यदि 4 महीने के अंदर नहीं करके देता है और 4 साल भी हो गया नहीं करके देता है, क्या हम उनका गुलाम बन के रहेंगे? क्या हम उनका टेनेंट बन के रहेंगे? ये हो नहीं सकता है। कायदा में कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए। इसका मतलब हम कोर्ट कचहरी में जाके उसका हक हासिल कर सकते हैं। भाई साहब, कचहरी में क्यों जाना चाहते हो? कोर्ट कचहरी में जाके कोर्ट कचहरी में क्या होने वाला है? आपको कन्वेंस देने के लिए बताया जाएगा,
उसके बाद कोर्ट एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेगा। वो रजिस्ट्रार को अपॉइंट करने के बाद वो रजिस्ट्रार बिल्डर के तरफ से आपको कन्वेंस करके देगा, कोर्ट का रजिस्ट्रार। उससे अच्छा गवर्नमेंट महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा सोचा कि जहां जहां बिल्डर ने 4 महीने के अंदर कन्वेंस करके नहीं दिया, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार आपको कन्वेंस करके देगा एज ए रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट। तो मतलब कोर्ट में न जाते हुए ही डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार आपका पूरा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा और आपको कन्वेंस करके देगा। ये जो बिल्डर करके देना है वो कन्वेंस रजिस्ट्रार आपको करके दे रहा है। इसका मतलब अधिकार जो आपको कन्वेंस में मिलने वाला है वो पूरा अधिकार आपको डीम्ड कन्वेंस में भी मिलने वाला है। एडिशनल एफएसआई, एडिशनल टीडीआर, रीडेवलपमेंट राइट सब कुछ मिलने वाला है। लोगों में गलतफहमी फैला हुआ है, डीम्ड कन्वेंस में आप रीडेवलपमेंट नहीं कर सकते, डीम्ड कन्वेंस में हमको सिर्फ प्लिंथ कन्वेंस मिलता है, डीम्ड कन्वेंस में कॉमन एरिया नहीं मिलता है, डीम्ड कन्वेंस जो है वो कानूनी प्रक्रिया में नहीं आता है। भाई साहब, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया है। हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने डीम्ड कन्वेंस को अपहेल्ड किया है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आपके सामने रख सकता हूं, हाई कोर्ट का कम से कम 100 जजमेंट दे सकता हूं जहां डीम्ड कन्वेंस को अपहेल्ड किया है। लोग इसको चैलेंज कर रहे हैं मगर कुछ फायदा नहीं है। तो इसके लिए डीम्ड कन्वेंस एंड कन्वेंस आर ऑन द इक्वल फुटिंग। वन इज इन द कोऑपरेशन ऑफ द बिल्डर, अनदर इज नॉन कोऑपरेशन ऑफ द बिल्डर। जिस तरह से हम कोऑपरेटिंग सोसाइटी अंडर नॉन कोऑपरेशन करते हैं उसी तरह से अंडर द नॉन कोऑपरेशन ऑफ द बिल्डर हम कन्विंस करके लेते हैं। उस प्रक्रिया को डीम्ड कन्विंस कहा जाता है। उसका दोनों का बेनिफिट सेम है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। यस सर। धन्यवाद सर। आई थिंक ये बहुत ही क्लियर है। अभी इस समय की जो लीगल इसकी स्टैंडिंग है बहुत क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सपोर्ट करने के लिए, हाई कोर्ट के जजमेंट सपोर्ट करने के लिए, तो डीम्ड कन्वेंस एंड कन्वेंस इज बोथ सेम थिंग, सेम बेनिफिट, सेम राइट्स विल बी गिवन टू सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनके पास में है संदीप जी का। ही इज सेइंग टाइम पीरियड फॉर कंपाइलिंग डॉक्यूमेंट इज वेरी शॉर्ट, विल इट बी एक्सटेंडेड और मोर टाइम विल बी गिवन, will be allotted? So he is referring this 15 days of special drive, whether this will be further extended. तो मुझे बताना है ये जो डीम्ड कन्वेंस का कायदा में जो दुरुस्ती आया वो कुछ 22 सॉरी ऑन 25 जून 2008 को आया है। उसके बाद 2010 में डीम्ड कन्वेंस का नियमावली आया। ये दोनों में मैं था। और उसके बाद आपको ये बताना जरूरी है, उसके बाद 2010 से लेके अभी 2020 10 साल डीम्ड कन्वेंस का प्रक्रिया चालू है। और आने वाला दिनों में अगला 10 साल 50 साल मुझे पता नहीं है, ये डीम्ड कन्वेंस चलने वाला है। 15 दिन में आपको सिर्फ अवेयरनेस किया जा रहा है कि डीम्ड कन्वेंस का प्रावधान है, उस डीम्ड कन्वेंस प्रावधान का आप बेनिफिट लीजिए। और ये 15 दिन में आपको डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार को, जरा सुन लीजिए आप मैं क्या बता रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार और डेप्यूटी रजिस्ट्रार को ये आह्वान शासन ने किया, गवर्नमेंट ने किया कि डीम्ड कन्वेंस का अवेयरनेस पब्लिक में किया जाए। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, लोगों को इसका जानकारी देने के लिए, क्योंकि 1,15,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी में अभी भी 80% कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वेंस हुआ नहीं है। तो लोगों में जानकारी देने का एक मुहिम है। और उसके बाद आपको सबमिट करना है। आप 15 दिन में करिए, 1 महीने में करिए, 2 महीने में करिए, 3 महीने में करिए। इसके लिए हमने आपको बताया महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन आपको ये जानकारी आने वाले 1 साल देते रहेगी। इसके लिए आप ये गलतफहमी मत रहिए। 15 दिन के अंदर आपको जो है कन्वेंस के लिए एप्लीकेशन डालना है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी एक प्रावधान किया है कि ये 15 दिन के अंदर हर एक डेप्यूटी रजिस्ट्रार उनका सोसाइटी, उनका एरिया में जो भी सोसाइटी है, 15 है, 20 है, 50 है, 100 है, 500 है, 1000 है, 2000 है, 5000 है, हर एक डेप्यूटी रजिस्ट्रार, मुंबई में 2000 2500 सोसाइटी का एक रजिस्ट्रार है, उनको ये 15 दिन के अंदर उस सोसाइटी में से एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है। उनका कन्वेंस हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं किया, तो उनको डीम्ड कन्वेंस का प्रावधान के हिसाब से आप कन्वेंस करो करके उनको इंफॉर्मेशन दे रहा है। और आपको ये जानकर होके खुशी होगा कि कमिश्नर साहब ने खुद अपना सिग्नेचर किया हुआ लेटर हर सोसाइटी में देने के लिए
डिप्टी रजिस्ट्रार और डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार को बताया गया, वो लेटर हर सोसाइटी में पहुंचेगा, उनसे इंफॉर्मेशन लिया जाएगा, इंफॉर्मेशन के हिसाब से फिर आगे का जो कार्रवाई है इंफॉर्मेशन देने का वो भी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार करेगा। तो इसके लिए 15 दिन जो है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसके बाद कायदा जो है ये गया 10 साल से था, आने वाला 10 साल भी रहेगा। इवन रेरा में भी यही बताया गया कि जो कन्वेंस बिल्डर नहीं देता है आप डीम्ड कन्वेंस के माध्यम से ले सकते हो। The benefit is only for those who applied before 15th of January 2021, or it will be applicable to all? I think you already have replied this question that this drive is just to make an awareness and it is applicable even thereafter. Am I correct, sir? You are 100% right. It is applicable. It is a part of the law. So the law is there. It's only awareness campaign. The law, district deputy, everything is available. They will make there, and only this is awareness so that the people who are under the wrong impression that during the COVID hearing is not taking place, how long that hearing will not take place, all that to remove that myth. Secondly, there was a myth that conveyance and deemed conveyance is cancelled. That also was required to be informed to the public at large that conveyance is not cancelled. Yeah. Mr. Karan is asking, it will be very helpful if it can be highlighted of ULC where society is facing problem. Should not be a solution by giving indemnity bond to DDR. You are right. See, in the circular dated 22nd June 2018, it has been said that if there is a ULC, then the DDR not the conveyance because there is a government interest is involved. So therefore, what you need to do is, in such places, you need to go to the collector of the district, get that ULC provision removed, and that is getting done. And once that is done, then you can go for the deemed conveyance. There are some district deputy registrar who are also saying that we will give you the deemed conveyance, and thereafter, before the name is entered in the property card, they will have to go to the collector and get the ULC name removed. So what is this ULC all about? ULC is nothing but Urban Land Ceiling Act. Now, when the Urban Land Ceiling Act was introduced, what happened was that government used to give the approval for the economical class housing and requesting them that 5 to 10% of the built up area need to be given to the government so that they will be able to distribute to the economically weaker people. However, some builders, though they agreed to give 10 to 5 to 10% built up area, they did not give and they sold all the flats to the various people and they siphoned the money. So in order to get those entitlement, government has put this remark that this particular property is under the ULC. And then if you want that you need to get the deemed conveyance in your name, then you need to get this ULC remark removed from the respective district collector. Thereafter only you will be able to do. I fully agree with you. By giving an indemnity bond to the DDR, I think it should be possible, and your suggestion I will definitely present to the government, and if we are able to do that, definitely we will do that. Sir, next question here. Is this drive mandatory for all the housing society? And if it is not undertaken by the society, is there any action to be taken by the registrar? See, let me tell you, this is a campaign, and honestly, the very purpose of formation of the society is to get the conveyance. If the formation of the society is to get the conveyance, then if the purpose is not done, then what is the use of forming a society? So therefore, the government is creating an awareness to the people that please go forward, take the conveyance, and if you have any queries, please come back to us. So this is more of an voluntary action taken by the government. I don't think if you don't take the part in the deemed conveyance drive, there will be any action against the office bearers. But only thing is, if the members want, they can take action against those office bearers because they are not taking the benefit of the government. And therefore, I am of the view
that one should go ahead and get the benefit of the deemed conveyance drive, or at least in next 15 days get the information, and thereafter start working on getting the various documents and apply the deemed conveyance as early as possible. Our builder has taken extension for under construction site under RERA Act. We got partial completion certificate from, that is Pune Municipal Corporation, and formed the society from last 1 year. Also 8 to 10% are not sold. So in this case, without NOC from the builder or not responding, whether the deemed conveyance is possible, the answer is 100% possible. There is no problem. Once the society is formed, within 4 months he has to do the conveyance, and if he is not doing the conveyance, you can go under the conveyance and get the conveyance of your proportionate land. But whatever is he wants to do another building, you cannot take away his right, because that is his right. But part of the land in which your building is registered or society is registered, you will be able to get the conveyance. Next question is, what about the stamp duty for unsold flat? Yes, for unsold flat, there is no question of payment of stamp duty. Government has already issued a notification to that effect, and accordingly, you can go ahead with the conveyance. Samir, I have a question. Huh. Our application for deemed conveyance was rejected about 4 years back on some fictitious ground. Can we reapply? We will have to study your application or the rejection. If the rejection is based on certain lack of documents, that you are not given a proper area, you are not given the property card, you are not given the approved plan, you are not given this, because of certain lapses on the part of the society, then of course you can fulfill those compliances and apply for the deemed conveyance once again. Suppose it has been rejected because of the certain court cases, because of the opposition made by the builder, and builders' rights are upheld, and suppose in such cases where the conveyance is done or rejected because certain objections raised by the landowner and the builder, or because of certain technical reasons, in that case maybe you will have to go to Honorable High Court and file a writ petition, and then get the that deemed conveyance rejection order set aside, and get then apply for once again as per the directions of the Honorable High Court. So this is possible. So we'll have to study that. We have to study. Yeah. I would suggest in the process of this 15 days, please go and show that deemed conveyance rejection order to the DDR. Try to understand from him whether he is going to accept the new application as you have complied with certain documents. Then he can receive it once again. Yeah. Mr. Gomes is asking, is there any help desk allotted by the Deputy Registrar for the benefit of societies who would like to initiate deemed conveyance? Please share the contact detail of such guide for benefit to all the participants. Mr. Gomes, I think Maharashtra Societies Welfare Association and Mr. Prabhu has already announced that this drive is given by the registrar, and the MSWA already going to support all the societies. Whosoever has any requirement about deemed conveyance, they want any guidance, anything, can approach the Okay. our society. Yeah. Yeah. Rajiv, let me tell Mr. Gomes. Yeah. Every deputy registrar of your ward has been directed by the cooperative commissioner to initiate and take a lead in giving this information. Instead of going to the deputy registrar also, even you can go to the district deputy registrar who grants the conveyance. So if you want, as far as Mumbai is concerned, we will be able to give you each ward-wise address, district-wise address of entire Maharashtra, and whatever is the landline available of those officers and their email address. Definitely we will be publishing in that booklet. At the end of the day, the purpose of the Maharashtra Society Welfare Association is to empower the societies who are in a position to do the conveyance themselves. And in the process of empowering, you are looking for a contact address, absolutely it will be available. Even I would suggest that you go to Sahkar Ayukt website
please go to Sakar Ayukt website. Just write location. There is a left side. There is a icon. Locate your registrar. So if you write your ward wise or taluka or district, you will get entire district wise, taluka wise registrar, deputy registrar, their contact number with their photographs and email. So it is also available online. So I am not giving you an information which is not available in the public domain. I will be giving you an information which is available in the public domain, and that booklet will be made available to each one of you. So I think Gomes, your question is answered. In addition to that, what Rajiv Saxena said, yes, this is available for you for 15 days, but our association is available for you for all the 7 days from morning 10 to evening 7, and we are also available for next 1 year. We want to see that every society in Maharashtra is able to get the conveyance of land and building. We have already published 2 books which is costing 500 rupees each in English and Marathi. But if you want, we are going to come out with a booklet which will have about 50 pages and in which all the information will be given to you. Yes, sir. Rajiv. So, few of the members are not paying their property tax since last 10 years. Still, can society get a deemed conveyance? Whether you pay property tax or don't pay the property tax, is given from the landowner and the builder to the society. Therefore, whether you pay property tax, don't pay the property tax, it will not come in your way. What will come in your way is the stamp duty. If some of the members they don't pay the stamp duty, it will become the responsibility of the society. The stamp duty is paid, and thereafter you will be able to get the conveyance. Nilesh Raut has a question. Does society has to bear any financial expense? There are minimum expenses which need to be borne. What is the minimum expenses? 2000 rupees court fee you have to attach to the application for deemed conveyance. There is a form number 7 on which you have to attach 2000 rupees court fee. Secondly, the district deputy registrar, whatever the opponents are there, to those opponents you have to send by post. So the postal expenses registered post. Third thing, if the opponents are not available, then the registrar asks you to make a public notice, and whatever is the public notice, 25,000 to 30,000 for 2 newspaper publication notice expenses. Thereafter, everybody has to pay the registration of the agreement. If that is not done, in that case, at least stamp duty should be paid. There are say 100 flats, 80 flat owners have paid the stamp duty, they have given the proof. 20 people have not paid the stamp duty, neither they have given the proof. In that case, though 20 flat, you have to pay the stamp duty. That is a cost. Third, you have to pay 30,000 rupees registration fee. Fourth, each page 20 rupees scanning fees you have to pay. And then all this process, as I was saying, all this involves going to the different department. Now, if you hire a consultant, the consultant may charge anywhere between 5,000 rupees per flat to 30,000, 40,000 rupees per flat as his expenses, cost, fees. You can ask number of consultant, take their quotation, and you want to get it done through the consultant, you can get it through the consultant. You want to do it yourself, you can do it yourself. The question is, there are lot of legal departments involved, there are a lot of legal provisions involved. So the other side builder may appoint corporate advocates and lawyers, and they may come with lot of technical issues. In order to counter them, maybe you need strong advocate, maybe a consultant. You may take their help or may not take the help. If you take their help, then their expenses. If you don't take their help, then 2000 court fee, postal expenses, your xeroxing expenses, then your notary expenses, then your what you call newspaper advertisement of the notices, then your stamp duty registration of the unpaid people, and the 30,000 registration fee. With this, your conveyance can happen. These are the expenses. Yes. Thank you, sir. You also replied the next question which was there. What are the expenses for different departments? So I think initially you have already replied. I'll take a next question, whether the deemed conveyance is applicable to the collector land. Collector land, MADA land, deemed conveyance is not applicable. However, BMC land, CIDCO land, deemed conveyance is applicable. Next question I'll take.
Our builder has taken extension under construction site radar. We got partial completion certificate. I think that I have answered already. Yes, we have already answered. Yeah, we have answered. Plan of Prashant, the building is one of the criteria for DC, deemed conveyance, along with the architect certificate. Answer is yes, it is one of the requirement. You need to give the building plan, and also you have to give the architect certificate. If it is a layout in which there are 3 or 4 buildings and one of the building is going for conveyance, then what is your entitlement? You need to do that so that it becomes easier. Yeah. Another question is in our case, 25 lakh of obligation of building to the landowner is due, and now developer not support us for conveyance deed or deemed conveyance. What is the solution? Absolutely, there is no problem. You can still get the conveyance, because not paid to the landowner is a dispute between the landowner and the builder that will not come in the way of deemed conveyance. Next question is, our CHS is on the lease land. Can we be able to do the deemed conveyance? See, if your conveyance is already on the lease land, you have got already a lease land, then there is no question of further getting the deemed conveyance. So that is not possible. So you will get a deemed conveyance only on the what is known as your own. If the even the lease is not given, you can get a lease conveyance. But if you already got a lease land, you want to convert into ownership, then what you have to do is you have to hire your own advocate. You have to go to the landowner, ask for his price, and if he is ready to do it on ownership, then you can get it done. Yeah. Mr. Madhur has a question. If we are signing indemnity bond, society having not OC but builder did not constructed society as per the approved plan, will the committee member will be answerable? No, not at all answerable, because ultimately the building is there, society is registered, people are staying. So you give an undertaking to the responsibility will be of the society by passing a resolution in the general body, and then at least get the conveyance of the land, so that in due course you will be able to get the what is known as land free from all charges in your name. There is a very good question. Not making the drive online defeats the COVID guidelines and leaves the scope for corruption. Let me just tell you, whoever has asked this, Melvin has asked this question. Sir, this is a quasi judicial authority, and the application has to be made online, so that the government keeps the track as to how many applications have come, whether within 6 months the application has been disposed of or not. And secondly, uh, because it is a something related to the title of the land, which is involves crores of rupees, therefore a proper opportunity need to be given to the landowner and the builder from whom the land is been taken away. And therefore, after giving a proper opportunity, hearing notice, it will be done. Otherwise, the High Court will set aside. Now, the third question is the scope for the corruption. Sir, our entire system, let me honestly put it, is corrupted, because the people who are want to make the corruption, what I'm trying to say is, it is the people whom we have to blame. The person who is making application, if he is very straightforward, he wants to put up all the details properly, then there is no question of corruption of whatsoever, and you don't have to get carried away. He may succeed. Let us assume for a minute, even the builder, by making a corrupt practice, is able to get your deemed conveyance rejected. There is a honorable High Court, there is a honorable Supreme Court, where you can get your justice. It is problem is that people want guarantee. People want to get the things done the way they want, and it is we who pay the corruption, and then we ourselves blame. So my take on this is, I have seen a lot of registrars, seen lot of people who are uh, clean, who would like to do the work as per the law of the land, and they are also answerable. The enquiry can be put against it. If you are so concerned, every government department puts a board there, please complain to Anti-Corruption Bureau. Anti-Corruption Bureau's numbers are put, and it is also given, don't get involved in any corrupt practice. Please, if you are so aggrieved, please bring a anti-corruption people, put a anti-corruption there,
So many registrars are also caught under the anti-corruption. I am not saying that everybody is honest. There may be 1, 2, 3% people who may be corrupt, and because of that we cannot level the entire department as a corrupt. Let us appreciate that a drive has been taken, people are getting educated, people who were not aware are given opportunity to come forward and get the conveyance done. Now, if we are talking about all the negative aspect, then there is no way. So therefore, my humble submission is that these are the arrangements which are done. Let us take the full benefit of it without putting any caveat, or without putting any negative thoughts on that. Thank you very much. Lakshman has a question, sir. Building is on railway land, uh, Malad East. Can we get a deemed conveyance? Yeah, building is on railway land, Malad Ah, East. Can ah. we get the deemed conveyance? Yeah, if it is on the railway land, and there is a builder who had taken that railway land on the lease basis or ownership basis, and then he has constructed the building and sold you the flat on ownership basis under the Maharashtra Ownership Flat Act, you are going to get the conveyance under the deemed conveyance. There is no problem. What is excluded is only collector land, and what is excluded is MADA land. Other than that, everything else is covered. Now the next question is, what is the difference between deemed conveyance and property tax title of the flat holder in the municipal record? Sir, property tax is given in the flat owner, and you are the owner of the flat, and in order to collect the property tax, the bill is issued. So that does not mean that the land is belonging to you. Land may be belonging still to the landowner. In order to get the land title transferred in the name of the society, which is a collective body of all the flat owners, you are required to do the conveyance. Yeah. Chetan has one question. I think he needs some information. Mira Road land is under someone, and it is said that conveyance in Mira Road is difficult to get, is as some cases going on in Supreme Court. Is this true? See, in Mira Road and Bhainder, there is a part of the land which is in the name of Estate Investment Company. There is a estate investment company who is considered as a super landowner in the collector record. And in order to get the conveyance or deemed conveyance, we need to pay certain 100 rupees or 200 rupees per square foot. He charges as his NOC charges to grant the conveyance of the freehold right and to take away his name. So I think you should pay that money, 100 rupees or 200 rupees per square foot. He charges his fees, I think, and he also gives the installment. Instead of getting into all the litigation, you may pay that money and get your conveyance. And rest, if the DDR, once you give the DDR also the application, he will ask whether there is a NOC from the super landowner. If that NOC is available, then he grants. Suppose he rejects, if you want to go to the Honorable High Court, you can go and get the conveyance done. The problem with the Mira Road people is, they don't go to the High Court, they don't go to the Supreme Court, they want everything in their platter. It is not possible. If the conveyance is not given, because the law says once the land is constructed, naturally building is constructed on a particular land, you should become the owner of the land, and that is provided under the law. But the Mira Road people are not ready to spend to go to the High Court. That is a problem. Otherwise, conveyance is possible in Mira Road and Bhainder also. Yeah. Thank you, sir. Next question is Vijay Ka. He's saying his building is 30 years old. Registered serious 4 to 5 years back, went for the conveyance, and builder is non-cooperative. Now, information received that we have to take back conveyance application, and then only we can go ahead for the deemed conveyance. That is true. If you have gone to the court, then you have to either pursue with the court or withdraw the court case and come to the deemed conveyance. So both, you cannot do the forum shopping, which means you are going to the consumer court, you are going to city civil court, you are going to the deemed conveyance. All cannot happen simultaneously. You have to take any one of the route. It is like, I want to go to Delhi, I go by car, I go by train, I go with the plane. All three at a time is not possible. You have to take any one of the route. If you are going by train, go with the train. If you have booked the
ticket in flight, get it cancelled. You are booked by bus, you get it cancelled. Same way, if you are going to the city civil court or a consumer court, withdraw from there and come for a deemed conveyance. Our society is situated on lease land of MADA. Shall we be able to get the deemed conveyance? Answer is no. Uday Shankar ji, Uday Kumar, let me tell you, if a land is on the lease of the land MADA, you are not going to get deemed conveyance because MADA is excluded from the deemed conveyance. What about society under SRA on collector land? No, again, for a SRA, lease is given by the SRA only. So you have to go to SRA. Right now, deemed conveyance is not available for SRA societies. Next is, one question is for society within a complex. We are 4 societies within a complex that the same builder has sold. Wanted to know if the DC application individually is possible or we have to do together. Sir, it is come together, form an association and get together, or you want to go individually, yes, you can go individually also. In that case, individual rights as per the built up area will be given, for which you have to get an architect certificate, and accordingly you can have all the societies separately. Conveyance also will go separately, so there is no need of going together. Would there be stamp duty applicable on a premises has been purchased in around 1986? Okay, there is a question to Kadu Sahab. Kadu Sahab, Ajay Kadu ji, आप available है? yes sir. Kadu Sahib, there is a question to you from Uday Kumar. Kadu Sahib, please arrange this type of drive for lease land of I don't know, lease land in the name of Kaushala, Goshala, no, in the lease land. लीज लँड कुठली? I don't know. Uday Kumar, is available? Uday Kumar, मुझे ये बताना है ओके कि कन्वेंस का जो ड्राइव है वो लीज लैंड के लिए भी ड्राइव लागू है और ये फ्री होल्ड के लिए भी लागू है. कन्वेंस का मतलब ट्रांसफर. यदि आपका जमीन मान लो एक सिडको के ऊपर है, सिडको उसको लीज ही देता है. यदि बीएमसी का लैंड है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लैंड है, वो भी आपको लीज ही देता है. तो लीज कन्वेंस हो सकता है. एंड ये जो ड्राइव है ये लीज लैंड के लिए भी लागू है, फ्री होल्ड के लिए भी लागू है. ठीक है. सो देयर इज नो नीड ऑफ सेपरेट ड्राइव फॉर लीज होल्ड लैंड. ठीक है. ओके लैंड इज इन द नेम ऑफ लक्ष्मण का सवाल है, लैंड इज इन द नेम ऑफ कौशा, तो क्या डीम्ड कन्वेंस मिलेगा? आंसर इज यस, वो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. यदि उधर बिल्डिंग बना है, आप लोग रहते हो, आपको बिल्डर ने फ्लैट बेचा है और गौशाला जिसका था उन्होंने उस लैंड को डेवलपमेंट के लिए दिया है, ये पूरी डॉक्यूमेंट देकर डीडीआर जो है आपको डीम्ड कन्वेंस देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी हैव ए सोसाइटी ऑन ए प्लॉटिंग लेआउट but builder has not made the conveyance deed with our society till today. So what can apply for the deemed conveyance? Answer is yes. यदि प्लॉटिंग भी है आपका, यदि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, प्लॉटिंग भी कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने किया है, पूरी प्लॉटेड का डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम से आप करके ले सकते हो. यदि वो प्लॉटेड करते टाइम इन्होंने ये लिखा है कि आपका सोसाइटी बनेगा, सोसाइटी बनाने के बाद हम आपको कन्वेंस देंगे, यदि ऐसा लिखा है तो आप डीम्ड कन्वेंस जा सकते हो. अदरवाइज आपको सिविल कोर्ट में ही जाना पड़ेगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन. दूसरा है, आवर सोसाइटी इज 20 years old, रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी ऑन लीज लैंड फ्रॉम दरगाह ट्रस्ट. सो कैन वी गेट द डीम्ड कन्वेंस? मैं आपको बताऊं, आपको यदि दरगाह ट्रस्ट ने लीज में दिया है, आपको ओनरशिप करना है तो दरगाह ट्रस्ट के पास ही जाना पड़ेगा. यदि दरगाह ट्रस्ट आपसे पैसा लेके, चैरिटी कमीशन का परमिशन लेके यदि आपको फ्री होल्ड देना है तो दे सकते हैं, लेकिन डीम्ड कन्वेंस से आपका लीज लैंड को ओनरशिप में कन्वर्ट करने का प्रावधान. अनडिवाइडेड लैंड, पर्सनल विंग एंड सोसाइटी विंग डिफरेंट, जॉइंट बिल्डिंग डिफरेंट एंट्री, हाउ कैन अ कन्वेंस बी गिवन एंड टू? देखिए, यदि एक ही लेआउट में 2 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग पर्सनल विंग है जो लैंड ओनर का है, दूसरा विंग है सोसाइटी का है, तो सोसाइटी का जितना अधिकार है उतने के लिए आप अपना डीम्ड कन्वेंस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने ऐसे कन्वेंस लिया है जहां एक लेआउट में अपना बिल्डर का या जमीन मालिक का एक बंगलो रहता है, उसका जमीन छोड़ के बाकी का जमीन का अधिकार आप ले सकते हो. प्लीज लेट अस नो द 6 or 7 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर कन्वेंस. सर सिंपल है,
कन्वेंस लेना है जमीन का और लैंड ओनर का। तो इसके लिए जमीन का और लैंड का कन्वेंस लेना है, तो इसके लिए जमीन का और लैंड का या बिल्डिंग का कन्वेंस लेना है। जमीन का कागज पत्र लगेगा। जमीन का कागज पत्र क्या है? प्रॉपर्टी कार्ड या 7/12। बिल्डिंग का कागज पत्र क्या है? अप्रूव्ड प्लान। ये 2 कागज हो गया आपका। तीसरा कागज कौन ले रहा है? सोसाइटी ले रहा है, सोसाइटी रीजन सर्टिफिकेट चाहिए। चौथा कागज पत्र कौन ले रहा है? मैनेजिंग कमेटी ले रहा है, मैनेजिंग कमेटी का रेजोल्यूशन चाहिए। 5वां कागज पत्र क्या चाहिए? आप जो है बिल्डर को लीगल नोटिस इश्यू किया कि नहीं किया। ये 6-7 पत्र चाहिए आपको, और ये सब डॉक्यूमेंट। और नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट चाहिए, हर एक आदमी का एग्रीमेंट बिल्डर के साथ किया हुआ, कम से कम एक डॉक्यूमेंट तो दे दो जो बिल्डर के साथ किया हुआ, वो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। और टाइटल रिपोर्ट दे दो। यदि लेआउट है तो आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट दे दो। इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारा डॉक्यूमेंट, बहुत ऐसा आपको करने का इच्छा होना चाहिए। यदि करने का इच्छा है तो सब कुछ हो जाएगा। प्रभु सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक आखिरी सवाल लें आज, और हमारा वेडनेसडे को, बुधवार को प्रभु से खास बात कार्यक्रम लाइव है यूट्यूब पे, और सेम सब्जेक्ट है, डीम कन्वेंस से रिलेटेड है। तो आप मेरा नंबर शेयर किया है, आप मुझे व्हाट्सएप है, नंबर पर आपके जो डीम कन्वेंस से रिलेटेड जो क्वेरीज है, जो क्वेश्चन है, वो जरूर उस दिन जवाब देंगे। लाइव रहेंगे प्रभु सर महासेवा वेबिनार पर और फेसबुक पर। तो आखिरी सवाल प्रभु सर चूज करेंगे, और आखिरी आज का सवाल लेंगे। नहीं, आज के का सवाल के पहले, कैन वी Yes, ऑल्सो अप्रोच रेरा अथॉरिटी फॉर गेटिंग कन्वेंस? आंसर मैंने बताया, आप डीडीआर के पास ही जाना होगा, क्योंकि रेरा में भी यही बताया, यदि आपको डीम्ड कन्वेंस बिल्डर नहीं देता है तो प्रावधान लिखा है उसी में, रूल में, कि यू अप्रोच द डीडीआर। यदि आप रेरा में अप्रोच करिए, रेरा वही ऑर्डर देगा, एज पर रूल नंबर सो एंड सो यू गो टू द डीडीआर एंड गेट द कन्वेंस डन। क्योंकि उधर डीम्ड कन्वेंस करके देने का जो यंत्रणा है वो रेरा अथॉरिटी के पास नहीं है, इसके लिए उन्होंने ऐसा एक प्रावधान किया है। तो अजय कडू साहब, यस सर। आपका कंक्लूजन रिमार्क दीजिए। आई वॉज वेरी हैप्पी दैट यू आर पार्ट ऑफ द टुडे सेमिनार, और Yes, सुरुवात केले की अभी तक आप है, मला खूप बरं वाटलं। आणि मला वाटतं नागपूरला सुद्धा अशा प्रकारचं सोसायटी होत आहेत, मोफाचा काही नियम त्यांना पाहिजे। मी कधी तत्पर आहे, मी नागपूरला पण येऊन तुमच्या लोकांना मार्गदर्शन करायला तयार आहे। अजय कडू साहेब, तुमचा कंक्लूजन रिमार्क। थँक यू व्हेरी मच फॉर बीइंग टुडे एज अ चीफ गेस्ट।